हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद नकवी, मेरे साथ है उस्मान समीउद्दीन। आप देख रहे हैं बट्टा फास्ट और हम बराह रास्त आ रहे हैं मैं कराची पाकिस्तान से, जहां भी अभी ऐलान हुआ है कि मुल्क में गुर्बत ख़त्म हो चुकी है। तमाम शहरियों को नहीं सिर्फ रोज़गार मिल चुका है मगर उनको पैसे भी मिल चुके हैं और उसी के साथ साथ मुल्क में तमाम पोलियो के केसेस भी सॉल्व हो चुके हैं। पानी के मसले हल हो गए, क्लाइमेट चेंज रुक चुका है। And all of that is more believable than the fact that the Pakistan men's cricket team just chased down the highest total in the history of the Cricket World Cup. This is the team जिसने आज तक बैटिंग सेकंड 250 से ज्यादा नहीं बनाए थे in the 21st century. This team, like in the World Cups, of course, not otherwise, even though it feels believable otherwise. Um, what the I don't know. हम लोग यार जितने साल से भी कवर कर रहे हैं ना हम लोग इस गेम को, लाइक आई फील लाइक इट्स द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट पाकिस्तान कि आपको कुछ नहीं पता होता है आप कौन से दिन किस दिन पे एक्चुअली उठेंगे। तो आज मंगल है, आई थिंक पूरी दुनिया में आज मंगल है 2023, एंड लाइक आई फील लाइक आई वोकन अप इन आई डोंट नो व्हाट एनीवेयर टाइम। ये कभी भी हो सकता है पाकिस्तान के साथ। ये 1992 में भी ये लोग 345 चेस कर लेते, कोई कुछ नहीं कह सकता था। 99 में चेसिंग 67 ऑल आउट हो जाते, ये भी नहीं पता किसी को। So I mean, what they've done today is, and I'm sure there's going to be people out there who are going to try to reason this out कि नहीं यार देखो अब्दुल्ला की बड़ी गेम है और रिजवान भी बड़ा चैंपियन है, एक्टर नहीं है इतना। Like people will try to reason this out, लेकिन we have to hold strong. Ahmed Naqvi, you and I, we have to hold strong against the forces of rationality, and just say कि यार ये जो मजहर अरशद स्टैट्स के जो एक सेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स, वो उसने कहा है कि यार लॉजिक के मुंह पे थप्पड़ है पाकिस्तान टीम, मतलब कि, और बिल्कुल सही बात कर रहा है कि ये आई थिंक सो। एक चीज मैं करना चाहूंगा साइड पे भी, आई वांट एक्नॉलेज टू अदर कैरेक्टर्स इन दिस, क्योंकि 92 में देयर इज वन टीम दैट एक्चुअली डिड चेज डाउन 320 प्लस। दैट टीम वाज श्रीलंका। तो श्रीलंका का भी इस स्टोरी में बड़ा अहम रोल था, क्योंकि उन्होंने भी जो मतलब पहले 30 ओवर में वो 600 रन बना सकते थे वो इजीली, लाइक उनके एक पहली बॉल से दे स्टार्टेड अटैकिंग, विकेटें गिर रही हैं, दे केप्ट अटैकिंग एंड देन दे डिड श्रीलंका। और दूसरा क्रिकेट इटसेल्फ एंड ओडीआई क्रिकेट, लाइक इस टूर्नामेंट के दौरान आई थिंक हम लोग बहुत दफा क्रिकेट की बजाएंगे, कंप्लेन करेंगे, गालियां देंगे, बट इट इज दिस इज सो ब्यूटिफुल अबाउट इट कि ये जो 8-9 घंटे हमने गुजारे हैं उसमें पहले 3 घंटे में तो दिस वाज वाचिंग लाइक अ like a torture movie, like it was just horrifying, कि वो शाहीन का घुटना फट रहा है और कैच ड्रॉप हो कर रहा है इमाम, और लाइक वो छक्के पे छक्के मारे जा रहे हैं और मतलब पाकिस्तानी एक दूसरे को देख रहे हैं, ब्रो हो क्या रहा है, लाइक द प्लेयर्स, and then to go from that to this, like you have to give cricket. The thing about this chase also, ये जो आज उन्होंने चेस करा है ना, ये I don't know how they've done it, right? This is for me this is the craziest thing. इन्होंने ये कैसे करा है कि एक 2020s की ODI चेस इन्होंने मुकम्मल तौर से 1992 के स्टाइल में चेस करा है। यार शुरुआत आपकी होती है थोड़ी सी इसी होती है, थोड़ी सी आपकी स्लो होती है, आप रन्स कर रहे हैं, हार्ड रन्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप 2-10 ओवरों के बाद, हाँ एग्जैक्टली। तो जैसे आप चेस करते थे ना 1990s में कि यार हम विकेट्स इन हैंड रखेंगे फिर देखेंगे बाद में जाके, और अगर 250 चेस हो जाता है ना तो यार आपकी तो कोई टीम ही नहीं है, क्या टीम है आपकी। सो दे एक्चुअली चेस्ड अ 2023 टोटल ODI टोटल इन टोटल 1992 स्टाइल। लाइक हार्ड रनिंग भी थी बीच में, रिजी की, अब्दुल्ला शफीक, वेरी वेरी प्रॉपर। लाइक द क्रेजिएस्ट थिंग यार, हाउ हैज पाकिस्तान in the World Cup, again I say, of 2023 के वर्ल्ड कप, यानी इस सेंचुरी को 23 साल हो गए, उसमें 2 प्लेयर्स जो एक कंप्लीट किस्म के टेस्ट प्लेयर्स हैं, अब्दुल्ला शफीक जो टेस्ट मैचेस बचाता है और सऊद शकील जो और भी टेस्ट मैचेस बचाता है, उन दोनों ने 2 एक ऐसी ओडीआई खेली कि आप यानी हम जितना भी जानते हैं यार, इनसाइडर नॉलेज हमारे पास है क्रिकेट की, पाकिस्तान क्रिकेट की स्पेशली, इतना एक्सेस है हमें, वी वेरी लकी दैट वे। लेकिन आई कैन सेफली से दैट
आप मुझे कोई और टीम दे देना, आप मुझे इंग्लैंड टीम के साथ एक दिन दे दे, 2 दिन दे दे, मैं उन्हें समझ जाऊं, मगर मैं पूरी जिंदगी पाकिस्तान के अंदर टीम एनवायरनमेंट में भी बैठूं ना, मैं नहीं समझ पाऊंगा कि ये टीम कैसे चलती है. आई कैन नॉट. it's yeah, like I think because obviously आप ये भी कह सकते हैं कि ठीक है तुक्के पे चल रहा है, but like obviously तुक्के इतने consistently चलना एक बड़ी अजीब चीज है. और वही है कि वही लोग एक दिन इतनी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाएंगे कि मतलब वो कुछ भी हैंडल कर लेंगे, और दूसरे दिन मतलब जब एक like one of the things I thought about with the Naseem thing, like, yes, it's devastating to lose Naseem, but when we did the Waqar Yunus interview, it's like how 92 में losing Waqar Yunus was probably worse than losing Naseem right now. Definitely was. Like, Definitely given was. what Waqar was, like, there's no one in cricket history just get statistics match Yeah. that Waqar Yunus. So Pakistan wins its only World Cup. And here we are. Yet here we are. And yeah, एक पूरी टीम पिछली वर्ल्ड कप साइकिल से 3 साल, 3.5 साल, 4 साल से चल रही है अपने टॉप ऑर्डर पे, टॉप 3 पे. सबको मालूम है कि यार टॉप 3 मेक 60% ऑफ पाकिस्तान ओडीआई रन. टॉप 3 के आपके बैटर्स हैं. इमाम रन बना रहा है, फखर बना रहा है, बाबर बना रहा है. तीनों ने इस टूर्नामेंट में कुछ नहीं करा है, घंटा कुछ करा है उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक. आज उन्होंने 345 चेस करा है विद द मिडिल ऑर्डर दैट यू नेवर हैड, which is a nice segue, I think, into a little bit of Rizzy appreciation. Huh? Like, एक तो उसने एक all time post match quote drop करा है, all time. He's basically, somebody just mentioned this in the comments, someone named Hamas, and I just wanted to go with that. Nasir Hussain does, 1 minute down, next minute up, like, even better. Sometimes it's cramp, sometimes I think up there with, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इससे बेहतर कोई आपको जवाब मिल नहीं सकता है कि जो सब सवाल हम वही पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ. Sometimes it's cramp, sometimes and I love एक तो as a quote, it's up there with Alex Ferguson's, post Bayern Munich Champions League football, bloody LA. ये उस लेवल का quote है. लेकिन like for him to have that knowing कि उसे मालूम है कि सब लोग ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये रिजवान अपना बड़ा ड्रामा शुरू कर रहा है, ये he has an idea of it, and whether he's like playing on it or generally, I don't know. I mean, ये एक रेसलिंग का सीन हो गया है. वो केफेब नहीं होता है कि आप यार ये आप एक्टिंग कर रहे हैं या रियल भी है, थोड़ा सा क्या हो रहा है इसमें. उसने एकदम ये एक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया है पूरे, and that's the worst analogy to use, but like he's just like, this is amazing what he has done. आई थिंक ये बात जो रिजवान, क्योंकि उसने खुद एक्नॉलेज कर लिया, राइट. तो अब वो रेसलिंग की जब बात हुई ना, तो जब एक दफा जब आप जो तसल्ली हो जाती है कि हाँ ठीक है एक्टिंग कर रहे हैं, तो फिर आप उस एक्टिंग परफॉर्मेंस को कह सकते हैं कि यार ये कितनी जबरदस्त एक्टिंग. और आज रिजवान ने जो अपना उसका पूरा रेpertoire है क्रैम्प एक्टिंग का, उसमें जो उसने एक नया शाहकार ऐड किया है कि वो उसने छक्का, पहले क्रैम्प हुआ है, फिर उसने छक्का मारा है, और इस छक्के के अंदर, उसी फ्लो के अंदर, ये नहीं यूजुअली अगर आप छक्का मारते हैं रुक के फिर एकदम से क्रैम्प होता है, लाइक एड्रेनलिन पहले गुजरता है और फिर बॉडी वापस उस अमेजिंग, लाइक जस्ट द पोएट्री इन मोशन ऑफ दैट. यार ये like, मैंने पहली बार देखा था, मुझे लगा ये कोई पिलाटीज की मूव है. मेरी ट्रेनर मुझे कह रही है कि तुम अच्छा ऐसे पहले तुम अपनी ये स्विंग करोगे, फिर ऐसे उलटना है. तो मैंने सोचा कि यार ये क्या कर रहा है. देन आई रियलाइज इट वाज स्लाइटली ऑकवर्ड जिस तरह से कमेंटेटर्स उसके बारे में बात कर रहे थे, और फिर फौरन से दे वर ऑल प्लेइंग इट अप आल्सो कि ही इज हैमिंग इट अप, ये ऐसा है वैसा है. हेडन कह रहा था कि नहीं रिजवान चीता है, कर लेगा. काफी मजाक उड़ाया टू द पॉइंट दैट इट जस्ट गॉट टू दैट लाइन वेयर लाइक, is this a little bit awkward कि लोग उसे कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है ये. And then when he got to the 100, everyone was like, oh यार what a stand up guy यार रिजवान, बड़ा यार बहुत अच्छा genuine इंसान है. और फिर रिजवान बाद में आके कह भी रहा है कि sometimes I cramp, sometimes I acting. Just amazing. His form actually, like if you take everything aside, his keeping has always been like outstanding. बहुत ही कम आप देखते हैं कि रिजवान has a bad game. And this is really important actually. लोग भूल जाते हैं, but बहुत ही कम बारी होता है कि he has a bad game behind the stumps. It's like it's a rare event, and he's been doing it now for 2-3 years. 3 साल से कर रहा है. इक्का दुक्का उसकी गेम हो गई जो बुरी होगी behind the stumps. And then now in the last 4 games, he's having last 4-5 ODI games. He's having that kind of run. शुरू में T20 में explode हुआ था ना, when he came and he became like this T20 batter for Pakistan. उसका पहला जो साल था, before the questions about his strike rate and like ball hogging came up, he's having that kind of impact slowly in like what was a really problem position for Pakistan. Middle order Pakistan ka ODIs mein
लोग परेशान थे कि यार यहाँ पे कोई है नहीं, nobody's filling the gap. He's come in the last, like, 6 months. I'm just going through his scores since like the end of August. He's got 67, 44, 63 not out, 86 not out, 68 and 131 not out. The guy simply is in very very hot form right now, और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसने काफी हद तक रिजॉल्व कर दी है. आई मीन ये आई थिंक किसी वर्ल्ड कप में से पहले अगर आप ये कहते कि पहले दो मैचेस में इमाम बाबर कुछ नहीं करेंगे, फखर को ड्रॉप कर चुके होंगे, सो दैट वुड बी लाइक अलार्म बेल्स एंड यू वुड लाइक एज यू सेड रिजवान कमिंग इनटू दिस काफी फॉर्म में था, तो थोड़ी आप उससे तवक्को रख सकते थे. अगर जैसा कि पहले भी कहते कि अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील ऐसी ऐसी इनिंग्स खेलेंगे, आई डोंट थिंक दैट वाज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कि पाकिस्तान का कोई भी अगर यंगस्टर छाता भी है तो बॉलिंग से होता है, तो लाइक top order batting is that's just a rarity of all rarities. And I think I want to go to Abdullah as well, but just to stick with Rizwan के दोनों मैचेस में अब वो आया है जब द टॉप ऑर्डर फेल कर चुका है, एंड ही हैज रियली शोन कि किस तरीके से इनिंग्स को पेस करता है. जो आज उसने बात भी की अपने पोस्ट मैच प्रेसर में कि वी ब्रोक द टारगेट डाउन, और ठीक है पहले 100 इतने ओवर में करेंगे, इतने तो ऑब्वियसली आपकी बातें कर सकते हैं, मगर यू हैव टू आल्सो बैक विद दैट एबिलिटी एंड दैट सेंसिबिलिटी. Amazing, like every time he wanted to get a boundary, he was able to get a boundary. I don't think you can say that about Pakistanis in a chase ever in any format. So it's been like white ball में उसका skill set, जैसे बाबर कभी कहते हैं, and I'm not taking away from their T20 achievements at all, मगर अगर एक कोई format इनका है ना जो perfectly इनकी batting के लिए suit करता है, I think the ODI is that format, that it gives them just a little bit of time to build and settle, और फिर उसके बाद they have that range. I think बाबर का तो हमें वैसे ही मालूम है कि बाबर का है range, average is about 58 in ODIs, 57 or 58. रिजवान का अब थोड़ा सा इमर्ज हो रहा है कि उसे मिडिल ऑर्डर में वो खेल पा रहा है, and he's kind of bringing that range up, and kind of उसकी वो एक गेम सेंस तो थी हमेशा से. आई थिंक कीपर्स की जनरली स्ट्रांग होती है. आई नो पाकिस्तान में माशाल्लाह काफी तारीखी कीपर्स आए हैं जिनकी गेम सेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन आई थिंक रिजवान की गेम सेंस हमेशा से स्ट्रांग रही है. एंड इवन यार, बट अहमद, इवन अकाउंटिंग फॉर ऑल दिस, सब चीज आप ले लें, टू चेस डाउन 345, अगर ये हाईएस्ट टोटल नहीं भी होता वर्ल्ड कप में, अगर पाकिस्तान का भी हाईएस्ट टोटल नहीं होता वर्ल्ड कप के चेस में, just to chase down 345 on any normal day in a World Cup is like a massive deal. It is a massive, massive deal. There's no doubt about that. जितना भी hamstrung है श्रीलंका का अटैक, पिच अच्छी थी, जो कुछ भी आप कर लें उसमें, but still chasing down 345, it's like it's a big thing. I don't think there's any doubt about that. Like, it's not just that chasing down 345 is a big deal, but Pakistan chasing down 345 is like basically, आशा भोसले अगर केंड्रिक लमार की रैप करने लगे, like it's just like ये कैसे, इसको तो आता भी नहीं था. And it worked. Yeah. Like that's the level. And I think अब्दुल्ला शफीक की अगर हम बात कर दें कि वो अब ये दूसरी पाकिस्तानी बैटर जिसका वर्ल्ड कप डेब्यू था, पिछले ने 50 की, इन भाई ने 100 की चेज में, और उस 100 की सेलिब्रेशन, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी ज्यादातर वो एक सजदा वजदा करते हैं तो वो एक जेनेरिक सा हो चुका है, तो उसने जो सेलिब्रेशन दी है, like I think I saw a tweet by Eamon who was saying that you can tell somebody who loves the big stage, and you have to give it, man. Matlab, if you've got a celebration that classy, and then in fact usko camera ne bhi was that moving cam that kind of caught it happening, so it's like the whole thing is graceful. He yeah, it off, and I think that's what Eamon said, the guy both metaphorically in that innings or literally in that moment knew what the big moment is and how to deliver on it. And ये कहना again एक पाकिस्तानी बैटर के बारे में आप कह रहे, it's just okay, like, sure, all right. Just yeah, it was just a crazy innings, यार. अब्दुल्ला शफीक, I mean, अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग सबको मालूम है कि साउंड बैटिंग है उसकी. लाइक वो कर लेता है, वो टेस्ट में खेल लेता है, वो कर लेता है बैटिंग. इस सीजन उसने कलंदर्स के साथ ठीक ठाक
season उसका गया था. I think he like tried and he showed a new side of himself, like showed an expanded range of his game, I think. और आज जो उसने जाके कर रहा है, यानी एक एकदम fully came onto the ground, looked so good, and some of the shots that he played like crazy. Yeah, that one shot that Watson was going crazy over, which was actually an insane shot, थोड़ा सा हट के smacked it through cover. It was like some proper game sense. I can't. एक चीज जो मुझे I can't get over the fact how much he looks like Talal Qureshi. Am I making this up? Am I making this up? Or like, I mean, I don't think you're wrong. थोड़ी सी right eye, a light colored eye or beard. Maybe it's that generic kind of thing. But like, you will come up with the best analogy somehow for like Talal's love of beats and Abdullah's love of, I don't know, something. But I'm sure you'll come up with something. But थोड़ा सा है. Like, I'm not wrong. I don't think. Yeah, I can see it. थोड़ा सा styling वाइलिंग करके हो सकता है. Stay with us for the hottest cricket takes, of course, and only the purest and hottest takes. Man, you've really thrown me off with this Abdullah Shafiq Talal Qureshi crossover. ये मैंने consider भी नहीं किया था कि ये Next time you watch it back, think about it. That's a good point. I think ये वैसे Abdullah Shafiq Pakistan, stole the show because I have to say, even after everything that Abdullah Shafiq and Rizwan did, Kusal Mendes' 100 was, I think, probably one of the best hundreds I've seen in my life, particularly in a World Cup match. Like, वो आए हैं, एक तो पहले उनका बॉय जो 0 पे भी आउट हुआ था, तो उन्होंने हर बॉल पे they were just going to attack. So, like you in the context of the later कि ठीक है, समझ आता है कि यार ये क्यों कर रहे थे, कि ठीक है एक आउट हो गया, दो ने सेंचुरी मार दी, because it was crazy. Like, आप विकेट्स ले भी रहे हैं, so they just and it wasn't just, यही बहस कर रहे थे हम लोग ग्रुप पे कि पाकिस्तान बॉलिंग कितनी बुरी करा रहा है, अच्छी करा रहा है, और मुझे यही लग रहा था कि हर ओवर में 4 अच्छी बॉलें थी और 2 एक एवरेज और एक खराब, and they were hitting both those balls for 4 every time, and they were getting the first ball of the over or for 4 almost every over. I think Pakistan didn't go an over without a boundary till Iftikhar came on, which is crazy how consistently they were doing it. मतलब पाकिस्तानी बॉलिंग के लिए काफी परेशानी हो रही थी, बट मैं एक बात इसके बारे में मेंडेस की, जो समरा विक्रमा था, man, that guy, I was thinking कि उसने एक शॉट खेला था इफ्तिखार को, he went back to the crease so far back that his foot was almost touching the wickets, और फिर उसे छलांग मारनी पड़ी वरना वो विकेट तोड़ देता, वो इतने पीछे गया था. और मैं ये सोच रहा था कि जैसे ऑर्थोडॉक्स मुल्कों में, साउथ अफ्रीका, एबी डिविलियर्स या इंडिया विराट कोहली व्हाटएवर, के you have a lot of technique and talent, और जो आप ऐसी बॉल्स पे you probably hit a different shot. मगर जब as you become really good in your game, then you start expanding and looking at these edges of the game. Sri Lankan and West Indian guys, they come in formed like this. Matlab, the unorthodoxy is how they play, and this innings was such a great example of it. Because once he lost Mendes, Dhananjaya De Silva played the most Pakistani innings of this entire match, and this guy still kept batting at like 120, 130. It was two guys just playing. Like, I felt bad for them because Pakistan totally overshadowed it. These were two amazing innings as well. Like 4 crazy hundreds today. Kusal Mendes का तो समर विक्रमा का तो he's like a classy batsman. वो यानी उसे बैटिंग आती है, वो बहुत ही एक एलिगेंट सा बैटर है. कुसाल मेंडिस का मुझे याद आ रहा था हमेशा, और जब भी मैं देखता हूँ कुसाल मेंडिस की ऐसी कोई इनिंग्स, मुझे हमेशा संजय मंजरेकर की डिस्क्रिप्शन याद आती है इजाज अहमद की. जब इजाज अहमद बहुत रन मारता था इंडिया को, तो मेनी इयर्स लेटर संजय मंजरेकर रोट एन आर्टिकल समवेयर, आई थिंक विजडन एशिया के मैगजीन में उसने लिखा था, where he said कि इजाज अहमद एक बदतमीज बैट्समैन था. And he didn't mean it in a derogatory way. He meant कि यार वो जिस तरह से he was ill mannered as a batsman, आपको ऐसे मारता था ना, ऐसे मारता था. एक तो इजाज अहमद of course had his stance also was like that. So aesthetically कोई comparison नहीं है, लेकिन जो impact है बैटिंग का वो उसी तरह से. कुसाल मेंडिस आपकी अच्छी बॉलों को बदतमीजी से छक्के मार रहा है वो, कि यार हसन अली एक बैक ऑफ लेंथ अच्छी बॉलों से करा रहा है, कोई रूम भी नहीं दे रहा है, कुसाल मेंडिस उसे मिड विकेट पे उठा के काउ कॉर्नर पे ऐसी बॉल उसे ऐसे मार रहा है जैसे कि आई डोंट नो किसी ने कोई सा हाफ ट्रैकर बॉल दी हो. तो कुसाल मेंडिस
अपनी जब पीक फॉर्म में होता है ना, तो ही हैज दैट ट्रेट कि वो एक बदतमीज बैट्समैन है। वो आप कुछ भी उसके सामने रख दें, वो आपको नंगा छोड़ के छोड़ेगा। लाइक ही विल नॉट लेट यू गो बेसिकली। सो बेहतरीन डिस्क्रिप्शन। and I think that is what kind of tempers, and of course ultimately जीत गया पाकिस्तान, because halfway stage पे मुझे काफी परेशानी थी पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए इस टूर्नामेंट में। काफी सीरियस किस्म की परेशानी थी, बिकॉज और मे बी एक्चुअली मे बी नॉट, अगर आप थोड़ा सा सोच के नहीं 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 देखें भाई, नहीं, मैं एक चीज कहूंगा कि शाहीन का इतना बुरा दिन बहुत कम आता है। ये मैंने पहली बार देखा है कि शाहीन इतना ऑफ कलर लगा है, या तो उसकी पेस में या लाइंस में या लेंस, हर चीज में शाहीन मुझे लुक मुझे वेरी। मुझे जो फीलिंग आ रही थी ना जब आप छोटे होते हैं ना, एंड लाइक उस वक्त आपके वालदैन मतलब they're your entire world and they know everything and you trust that they are infallible, and then the first time जब आपको अपने one of your parents जब नजर आता है कि वो भी इंसान है, किसी चीज पे रो रहे हैं या उनसे कुछ नहीं हुआ या उनको कुछ समझ नहीं आया, एंड लाइक वो जो एकदम से फटती है ना कि ओ शिट, इनको भी नहीं हो रहा है। लाइक दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग अबाउट पाकिस्तान बॉलिंग। इट्स लाइक मुझे बैटिंग से तो कोई वैसी कोई नहीं होती है एक्सपेक्टेशन, ना आपको। हाँ, या बट लाइक शाहीन से 80 से ऊपर जा ही नहीं रही है, और वो मतलब एक अजीब बेचारा देखो मुस्कुराता हुआ शाहीन का मेरी जो एक ऑप्टिमिज्म है शाहीन का, ये है कि ही इज नॉट गोना हैव इतना बुरा दिन शाहीन का नहीं हो सकता है, अनलेस देयर समथिंग रियली रॉन्ग, देन इट्स अ प्रॉब्लम। बट शाहीन यूजुअली ऐसा नहीं होता है। हसन एक्चुअली बोल्ड वेल डिस्पाइट जो बदतमीजी कुसाल ने उसके साथ करी है, कुसाल मेंडिस ने। हसन बोल्ड वेल इन पैचेस। हसन की मेरी फीलिंग आ रही थी, तुम्हें आई डोंट नो अगर याद है अहमद, 2016 में इंग्लैंड ने ट्रेंट ब्रिज पे 444 मारे थे पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छी And तरह याद है। yeah, and that was one of Hassan's first matches. उसी साल उसने डेब्यू करा था, and he actually bowled a really good last over in that match. Like जो पहली इनिंग्स का जो आखिरी ओवर उसने कराया था ना, he like gave 3 runs or 4 runs maybe. And उस वक्त हालांकि वो पिटा था बुरी तरह, मगर उस वक्त एक फीलिंग आई थी कि यार हसन अली शायद बॉलर हो सकता है। एक साल बाद वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत के वापस आया था एज द बेस्ट बॉलर। तो आई गॉट अ सिमिलर फीलिंग अबाउट हसन टुडे कि यार एक्चुअली पिटा है नो डाउट, लेकिन इसमें कुछ है जो ये शायद कुछ कर ले। So then he did well. Shaheen had an all-time bad day. What I'm worried about is I'm really worried about Shadab. Shadab or Nawaz, जिस तरह से when Iftikhar Chachu is your best spinner, 3 spinners में से, then आपके पास एक इशू चल रही है। और शादाब की फिर से he had a good game against Holland, मगर जब क्वालिटी कोई बैटर्स आए, then it's not that they did outstanding stuff against him. He bowled enough, there was again full tosses थी, again short balls थी, सही से बस उसकी निकल नहीं रही है बॉल सही से। I don't know what it is, but उसकी फिक्र है। पाकिस्तान, spin is going to play an important part at some point in this tournament. चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ spin is going to be important, और वहां पे पाकिस्तान need to be at their very best in a World Cup. तो मुझे फिक्र सबसे ज्यादा भी पाकिस्तान की स्पिन पे हो रही है। I mean, sure, you can choose to be optimistic about the pace. मतलब मुझे I think, I mean, यहाँ or तक is it बात experience? बात दुरुस्त है कि लाइक आप ये नहीं कह सकते कि इन सबके सारे दिन इतनी खराब जाएंगे, मगर क्योंकि पाकिस्तानियों को हमने इंडिया में खेलते हुए कम देखा है, तो अभी ये वाला जो मैच था ना, जो अक्सर जब आप इंडिया में मैचेस देख रहे हो तो ये बस उन्होंने भी 650 बना दिया, अगले ने भी 800 बना दिए, लोग पागलों की तरह छक्के मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं वो छत पे मार रहे हैं, लाइक तो वो क्रिकेट हमारे बॉलर्स के साथ हमने देखी नहीं है, तो वो मुझे थोड़ा सा एक लग रहा था कि oh shit, like are we getting found out on these pitches or whatever is going on, but वही है कि these guys, this is clearly, you can tell that no one's really bowling anywhere near their Yeah, peak, that's and true. Pakistan winning the match despite that is absolutely wild, but वही है कि अगला match, so with ऐसा that, बड़ा like काम I होता है। really just I yeah, well, but यार anyway, लेकिन so we honestly, basically need to find like, sorry. मैं कह रहा था कि मैं ऑनेस्टली मैं थक गया हूँ यार इंडिया पाकिस्तान मैचेस से। लाइक इतने वो एक एक लेवल पे एग्जॉस्टिंग होते हैं ना, दैट आई एम जस्ट लाइक कम ऑन यार, जस्ट गेट इट ओवर एंड गेट द टूर्नामेंट अंडरवे। Yeah, I think that's the right word. It's so exhausting. Like it's just, और मतलब कि अभी मैं ये कह रहा हूँ और मैं कल से कंटेंट कर रहा हूँ कुत्तों की तरह यहाँ से वहाँ, yeah, India Pakistan, what a big rivalry, it's so big.
It's just, but yeah, it's At least painful. there's not a reserve day. At least there won't be a need for a reserve day this time. Who That's knows, that's bro? With this World Cup, there's no way of knowing. It could be like every day could be a reserve day, try day, whatever day. Friday, हाँ नहीं नहीं ये तो Um, पहले okay, this has gone way longer than we anticipated, yes which it is has. But great. we're at the end now, I Uh, think. yes, so yes, I mean, we'll just do India once that match is over. You know, I like think इंडिया पे हमें अपनी सबसे जो शॉर्ट एपिसोड है ना वो करनी चाहिए जो भी होता है रिजल्ट 5 मिनट हार्ड डेडलाइन खत्म डेड स्टॉप एट 5 मिनट्स खत्म I आज mean, I इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और बड़ा अच्छा मैच दिलचस्प मैच था और वर्ल्ड कप के कितने और मैचेस बाकी होंगे 6 और मैच 7 और नहीं 5 और मैचेस बाकी होंगे दोनों टीम के तो अस्सलाम वालेकुम खुदा I think actually there is one last topic to be discussed, which is that who's the Pakistani most informed, like Who? deadly, Ramiz Raja. Like रमीज राजा आता है और विकेटें गिरना शुरू होती हैं भाई रमीज राजा ने आया है और 3 बॉलों पे 3 कैच भी निकले लाइक ब्रो but dude एक मिनट Rambo like what has like I think 11 wickets in like fucking 3 spells or something. रमीज वह पाकिस्तान को चाहिए था कितना तकरीबन 200 रन चाहिए थे अभी भी चेस में आई थिंक 150 चल रहा था पाकिस्तान का फॉर 2 थे और पार्टनरशिप जम रही थी 200 चाहिए थे रवीज आके कहा कि नाउ तो अब तो यानी ये केक हो गया पाकिस्तान के लिए मैं कहा ओ भाई मेरे भाई कहां से केक हो गया बट सही बोला रमीज ने इसीलिए रमीज राजा वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर है और कैप्टन है और हम लोग बट्टा फास्ट कर रहे हैं There you go, bro. Sure, That's the sad note sure. to I end mean, like, क्या कहते हैं वो उस वक्त ऐसी बातें भी कर रहा था कि श्रीलंका are desperate for a wicket. And it's like, you getting paid for this, bro. Like, that's actually the biggest thing that Ramiz Raja has accomplished, bigger than the World Cup. Well, on. like, I think एक अच्छा point किसी का ये था कि probably Russell is Counters. so bad for Sri Lanka that it balances it out What is because the diamond? Diamond. yeah, Khatam. because Rambo has been just lethal. He's just been absolutely lethal. I think diamond comes diamond आमिर सुहेल की एक तारीखी commentary की line है by the way. To just close this circle of commentary, this commentary Wow. goal, diamond cuts diamond. Finish. ये I think कोई ना मैं वो अगरबत्ती और हल्की गुलाब गुलाब फेंकना होगा दुरूद शुरूद पड़नी होगी इस माहौल की आलूदगी को दूर करने के लिए तो एंड में फिर से आपको बताते चले Pakistan has chased the highest total in men's World Cup history. This is an actual true sentence. Unbelievable, unbelievable. बहुत ही मजा आ रहा है कि ऐसा शो करने को भी मिला है आगे पता नहीं कैसे शो करने को मिलेंगे but from me and Usman that's all from Batta Fast at the World Cup for this episode. Thanks for watching.